So hello and welcome back to Legal Education, and in this module, or we can say that in this playlist which I am going to create, is all about IPR, that is intellectual property rights, and in which firstly we will deal with Copyrights Act 1957. Okay, so intellectual property rights are those rights which are granted or guaranteed to the राइट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द ओनर। ठीक है, कि कोई भी ओनर है जो कुछ क्रिएट किया है या कुछ इन्वेंट किया है, उसके क्रिएशन के लिए जो राइट्स मिलता है, दैट इज फॉर द इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज के लिए जो राइट्स मिलता है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, next is the introduction part. Firstly we will see, so what is copyright, we will discuss after this. First is what is the introduction about the copyright. तो copyright मतलब होता है कि it determine the कल्चरल हेरिटेज की, एक नेशन का कल्चरल हेरिटेज कैसे डिपेंड होगा, किस चीज पर वो डिपेंड करेगा। सो इट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन कि वहां के लोगों का लिटरेसी क्या है, ड्रामेटिक में कैसा है उनका क्रिएशन, म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क्स कैसे है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म उनका क्रिएशन कैसा है, साउंड रिकॉर्डिंग्स, इन सब चीज, ये दीज आर ऑल द एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट द कॉपीराइट, की उस कंट्री का कोई भी कल्चरल हेरिटेज क्या है। ठीक है, and this copyright not only protects the right of the copyright owner but also deals with the पब्लिक इंटरेस्ट, की हाँ ठीक है वो क्रिएशन तो उसने किया है, उसके लिए उसको उसका राइट्स भी मिल रहा है, बट इज इट बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक एट लार्ज? तो क्या वो बेनिफिशियल है, और बेनिफिशियल है तो इज देयर एनी बैलेंस बिटवीन द टू, मतलब कि हमारा कॉपीराइट ओनर का भी राइट्स मेंटेन होना चाहिए और पब्लिक के डिमांड्स भी मीट करने चाहिए। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज कॉपीराइट? सो कॉपीराइट इज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हमारे आते हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, देन आपका पेटेंट, देन जीआई, ट्रेडमार्क। सो दीज आर ऑल द ट्रेड सीक्रेट्स, दीज आर ऑल द थिंग्स विच कवर्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो कॉपीराइट उसका एक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, जो भी ऑथर्स होते हैं हु हैव ओरिजिनल वर्क सच एज लिटरेचर, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स, उन सबको क्या मिलता है, कॉपीराइट का प्रोटेक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट। ठीक है, जो कॉपीराइट होता है वो प्रोटेक्ट करता है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, नॉट द आइडियाज, की ठीक है आपके मन में कुछ आइडिया होगा कि हाँ एक ऐसा फिल्म होना चाहिए, बट अगर उस आइडिया को किसी दूसरे व्यक्ति ने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको एक्सप्रेस कर दिया, वैसे एक मूवी बना दिया, देन फिर आप नहीं कहोगे कि ये आइडिया तो मेरा था, क्योंकि आइडिया कुड बी सेम। There are lots of movies which are based on the same ideas but the expression are different. So copyright law protects the expression of ideas, not merely the ideas. The term copyright refers to a collection of exclusive right. Now what is exclusive right? It is a kind of negative right जिसमें कि जिसके पास ये exclusive right होता है वो prevent करता है others को, दूसरे लोगों को उस राइट को यूज करने से। लाइक मैंने एक बुक लिखा है, now all the rights belongs to me in regards to that book. Either I want to adapt that book, reproduce that book, publish that book, translate that book, or communicate it to the public or public performance, whatever I want to do I can do. This can be performed by other person only and only if I am giving the assignment or license to that person. We will discuss all these concepts in later videos. Okay, so this is all about the what is copyright. Now what is the historical background of the copyright? So इसका ओरिजिन हमारा कब हुआ है, तो इसका ओरिजिन हमारा हुआ है जर्मनी में, जब 1400s में आपका प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुआ था। तो पहले के जमाने में तो था ना कि आप हैंड रिटन लिखते थे इंक से, है ना, कलम से, ये वो, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का हमारा इन्वेंशन हुआ 1439 में, तब फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आया यूरोप में। तो यूरोप क्या बन गया, हब बन गया प्रिंटिंग प्रेस का और बाइंडिंग बुक्स का। तो क्या होने लगा, लोग कॉपी करने लगे एक दूसरे के क्रिएशंस को, है ना। तो फिर उसी टाइम पे फिर यूके में उसके बाद क्या हुआ, यूके में 1709 में हमारा एक्ट ऑफ क्वीन एने आया, जो सबसे पुराना, अगर कभी भी क्वेश्चन है व्हाट इज द ओल्डेस्ट कॉपीराइट लॉ, दैट इज द एक्ट ऑफ क्वीन एने। तो ये ओल्डेस्ट कॉपीराइट लॉ है जिसका ऑब्जेक्टिव, तीन मेन ऑब्जेक्टिव था, कि इसमें प्रोटेक्शन दिया जाता था 14 ईयर्स तक के लिए। उसके बाद नो सूट कैन बी फाइल्ड, इस टाइम पे मतलब कि अंडर द एक्ट ऑफ क्वीन एने रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड वन इज कि जो भी इन्फ्रिंजर था वो पर पेज के हिसाब से फाइन देता था। सो दैट वाज वेरी क्रूशियल। ओके, एंड लाइक अभी अभी कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने अभी कुछ क्रिएशन किया, नाउ द कॉपीराइट
success to you only. There is no need of registration, but registration gives an extra edge to your creation. Okay, इसके बाद हमारे पास 1847 में इंग्लैंड में कॉपीराइट एक्ट आया, उसी से हम लोग इन्फ्लुएंस होकर के हमारे इंडिया में भी बना कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957, which is still applicable in our country. Okay, now what are the objectives of the copyright law? So what are the objectives? To promote the progress of science and useful arts. ठीक है, जो भी यूजफुल आर्ट्स है उनका प्रमोशन, तभी तो हमारा कल्चर के बारे में भी पता चलेगा, है ना. देन प्रोटेक्ट्स क्रिएटर्स राइट्स. क्रिएटर्स का दो टाइप्स के राइट्स होते हैं, वी विल डिस्कस इट अबाउट लेटर. लाइक एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं और मोरल राइट्स होते हैं. ठीक है, सो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड यूज. बिना परमिशन के कोई भी आपके वर्क को यूज नहीं कर सकता. लाइक देयर आर डुप्लीकेटेड कॉपीज है, जिसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है उन बुक्स का, और रोड साइड में वो बहुत ही सस्ते दामों में बेचे जाते हैं. दैट इज अनऑथोराइज्ड यूज, तो उसको प्रिवेंट करता है. ठीक है. एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. अगर इन अनऑथोराइज्ड यूज को प्रिवेंट नहीं करेगा तो क्या कोई क्रिएशन करेगा, क्या कोई इनोवेशन दिखाएगा अपना? नो. सो बाय प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड यूज, कॉपीराइट आल्सो encourages creativity and innovations. Okay, then provide a legal remedy in case of infringement. We will discuss about the remedies and infringements. All these things we will discuss in later videos. And the main objective is to establish, see, the two main objectives we can say is the second one, to protect creators right, and the last second one is to establish harmony between the rights of the copyright owner and the welfare of the people. In the case of Amir Raza Hussain versus Cinevistas Limited 2003, Bombay High Court ने कहा था, क्या कहा था? That idea in providing the copyright a statutory protection is to encourage. Encouragement is the main idea, and originality, not to stifle it. Okay, next is John Locke's theory on copyright. This is the last concept which we need to understand while discussing the introduction part of Copyright Act. So John Locke's theory on Copyright Act, इन्होंने कहा था कि when something is like people are born with certain natural rights. अब उन natural rights में अगर वो अपना labor add कर देते हैं तो the fruits of those labor is wholly belong to that person जिसने वो creation किया. The same goes with this copyright also. When someone applies their labor, here R should be added. When someone applies their labor to a common resource, they create something new and become entitled to its ownership. ठीक है, तो जब आप अपना creation किसी चीज में लगा देते हो, किसी भी idea में, that becomes your own and you are the owner of that creation. This theory provides a foundation for copyright protection. It suggests that authors and creators have a natural right to their work because they have invested their labor in creating it. So we have discussed like various things in regard to this introduction part of copyright. So thank you, and if you have any kind of doubt, you can for sure ask me in the comment section. Thank you.